Good morning, and it's 6 a.m. and we are off to Ratlam because Raj has some work there, and I am accompanying him, and I am going to stay in a hotel for the whole day and going to pamper myself. So look at this, so beautiful. सुबह सुबह उठ के कितना अच्छा लगता है और इतना अभी मौसम भी बहुत अच्छा है तो I'll keep you updated during my whole journey and let's see how it goes. अभी हम रुके हैं बीच में पोहे खाने हैं इंदौर के लोगों को इतना ऑब्सेशन क्यों है पोहो के साथ वाह यार कितनी अच्छी हवा चल रही है ना वही मौसम तो बहुत ही सही है आज अच्छे टाइम पे हम निकले बहुत मज़ा आ रहा है कुड़ी तू कुवारी नीरी रूप दी पटारी कुड़ी तू कुवारी नीरी रूप दी पटारी तेरे नाल लाउणी यारी नहीं ओ कातला तू कट तेरे ने नहीं ओ कातला तू कट तेरे ने ताइयों बैग सुन होया तेनू बैग ताइयों बैग सुन होया तेनू बैग ताइयों काला सुन होया तेनू बैग ताइयों बैग सुन होया तेनू यस व्हाट क्या हुआ क्या बोलूं बताओ तुम्हें व्लॉग में ऐसे नहीं बोलते क्या आप बोलूं तुम्हारा बन रहा है वीडियो ओके अच्छा ऐसा है क्या हाँ थक गए क्या नहीं बस 20 किलोमीटर और पहुंचेंगे फिर मौसम सही है तो थकान नहीं है लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आती व्लॉग पे बिकॉज आई एम कैमरा कॉन्शियस कैमरा कॉन्शियस है वॉइस का क्या लिंक है बस मेरी चेहरा आवाज कुछ भी नहीं आना चाहिए ओह माय गॉड आई एम फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स श्योर सो दिस इज़ आवर रूम तो रतलाम में इतने बड़े बड़े होटल्स नहीं हैं 5 स्टार होटल्स नहीं है बिकॉज अ स्मॉल टाउन बट दिस इज़ अ डिसेंट रूम दैट वी गॉट एंड इट्स अ डिसेंट होटल यहाँ पे पूल वगैरह भी है गेम्स भी हैं जिम भी है बट आई थिंक इट्स नॉट ऑपरेशनल राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड रीजन्स सो बाकी हम आपको रिव्यू बता देंगे इसका कैसा है जैसे जैसे भी हम खाना ऑर्डर करेंगे स्टे करेंगे सो विल डेफिनेटली लेट यू नो हाय गाइस सो अब 11:30 हो गए हैं हम 10 o'clock पहुंच गए थे फिर हमने थोड़ा सा रूम में आके ब्रेकफास्ट किया एंड राज हैज़ गॉन टू वर्क सो ही इज़ एन एंडोडोंटिस्ट तो उनको कॉल आ जाते हैं क्लिनिक से सो रतलाम में भी वो केस करने आए हैं जो भी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं तो अभी वो क्लिनिक पे गए हुए हैं एंड आई एम अलोन इन रूम तो मैं सो गई थी थोड़ी देर और अब मैं उठी हूँ उठकर मैंने टीवी चलाया तो टीवी इज़ नॉट वर्किंग अपेरेंटली इट इज़ सेइंग कि रिचार्ज नहीं है सो आई एम गोइंग टू कॉल दी होटल रिसेप्शन कि आप प्लीज़ मेरे को टीवी रिचार्ज करवा के दो लेट्स सी व्हाट दे से एंड ऑल्सो इंटरनेट का वाईफाई का पासवर्ड आई एम गोइंग टू आस्क सो लेट्स सी व्हाट दे से हेलो मैं रूम नंबर 303 से बोल रही हूँ अभी टीवी नहीं चल रहा है हाँ और वाईफाई का पासवर्ड बता देंगे बताइए सॉरी ओके ठीक है थैंक यू और टीवी के लिए भिजवा दीजिए थैंक यू सो दे गिवन मी द पासवर्ड एंड टीवी के लिए भी वो किसी को भेज रहे हैं यस ऑल्सो मैंने सोचा था कि अब नाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड द डे अलोन इन दी होटल तो मैं बहुत बोर हो जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी तो मैंने आज थोड़ा सा सोचा है कि मैं अपने आप को सेल्फ पैम्पर करूँगी सो आई हैव गॉट स्टफ फ्रॉम होम लाइक नेल पेंट्स फेस मास्क एंड एवरीथिंग स्टफ लाइक दैट
So I'm going to show you कि how a girl can pamper herself, because it's very important. Like self love is very important, and me time जो होता है बहुत कम मिलता है when you get married. So today is my me time, and I'm going to use it like completely. And meanwhile I'm talking और light चली गई है. I don't know. I'm like small hotels, small towns. Like this is a good hotel, but light चली जाती है, and inverter generator, I don't know. Oh, it came back. So maybe उन्होंने generator on कर लिया. So I'm glad. So I'm going to start with a face mask, and then I'm going to wash my hair. मेरा hair बहुत oily हो गया है. So I'll show you what products I use on my hair, and then I'm going to like blow dry my hair. I've got a blow brush. I'm also going to show you the brush and how it works. And then I plan to do my lunch, and after lunch I'm going to apply nail paint, and then probably I can spend some more time relaxing and sleeping. And I hope Raj comes back like soon, so I'll keep updating you. Bye bye. So this is the mask that I'm going to use. I am Lemon Mask Sheet by Tony Moly, and it is such a cute packing. You can see it's a ribbon here. So basically Raj gave me a gift hamper, and there were a lot of products in that. So उसमें से ये निकला है mask, and I'm not sure, like I haven't used any Tony Moly products पहले. So let's see how it is. I'm going to give you a review. It's of 100 rupees only. So let's see if it is good or not. I'll update you. So I'm going to keep it for 10 minutes. मास्क के साथ अगर आपके पास फेस रोलर होता है तो काफ़ी वो सही रहता है. You can do a massage of your facial muscles. But I don't have a face roller. I'm planning to buy it soon. But अभी के लिए I'm going to keep this mask for 10 minutes, and then I'm going to wash my face. So I'll show you after effects of this face mask. So face mask मैंने remove कर लिया, and I washed my face. So this is how my face looks right now. So it looks quite fresh, and skin भी थोड़ी सी smooth लग रही है पहले के comparatively. थोड़ा travel किया था तो face oily था, तो उसके बाद अब skin smooth लग रही है. And I don't know about the glow, because इतनी जल्दी नहीं पता लगता है, to be honest. But I'll wait for the result like the whole day. Now I'm not going to apply anything, no face wash, nothing. I'm just going to wash my hair, take a bath, and then just get ready. So I'm going to show you what products I'm going to use for like washing my hair. So these are the shampoos that I use. It's Matrix Opticare Smooth Straight, and this is the conditioner that I use. But the shampoo is going to get over, because I've used it for I think 2 months I guess. And now I've ordered Wow shampoos, and I'm soon going to post a review about those shampoos. And after shampoo and conditioning, I'm going to use this Sephora hair styling cream. In the last video that I made about how I spent my Sunday, I used this same cream, and I gave a review about this cream. So if you haven't watched that video, you can check it out. It's on the channel. I'm going to post a link also in the description. And these are the nail paints that I have bought. So one from Color Bar, then 2 of them from H&M, and the remover that I'm going to use. So this is how I am planning to spend my day, pampering myself and talking to you guys. Hi guys. So I had shower and it's 1 PM और मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है. जब तक खाना आएगा I'm going to comb my hair and then use this blow brush. So this is Alan Truman's blow brush. So I bought it I think right after my marriage, and I've used it couple of times, so it's pretty handy. But the only problem here is that I just found out that there is no switchboard next to the mirror.
So this is a mirror that they have, but there is no switchboard, so I don't think that I would be able to show you now like how to use this. So maybe in the next video sometime I can show you how to use this one, and this time you can just see the after effects of the blow brush, and I'll give you an update when the also I'm going to give you the update when the lunch comes, how the food is and everything. And मैंने टीवी का बोला था सुबह, बट अभी तक टीवी के लिए कोई भी नहीं आया. आई वंडर खाना कब तक आएगा. तो मैंने 12:30 पे ही खाना ऑर्डर कर दिया, बिकॉज नाउ आई रियलाइज्ड कि इनकी थोड़ी सी सर्विस स्लो है, और जब खाना देने के लिए कोई आएगा तो मैं उनको टीवी के लिए भी दोबारा बोलूँगी. बट द वाईफाई इज़ प्रिटी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है वाईफाई. एंड अंदर कोई टाल्स नहीं थे बाथरूम में. That's a bad point, which I'm going to definitely tell them. Under soap, shampoo, conditioner and shower gel was there. So they were pretty okay. ठीक है, मैंने सिर्फ shower gel use किया. Rest shampoo and all I had. So yeah, that was the review of the hotel. But I'll keep posting about it. So तब अभी के लिए bye bye. So that's how my hair looks like after the blow brush. And so I use the blow brush to just straighten my hair because my hair are a little wavy. So I think this brush do a pretty good job because it has completely straightened my hair. And आपको जो ये brush है ये थोड़े wet dry towel dry hair में करना होता है, like just after you take a bath and you just towel dry it, and then you can use this brush. So I'm going to show you sometime soon that how we are going to use this brush. Till then just stay tuned to our channel, and I'll keep posting my rest of the day updates as well. So guys, food is here and I'm pretty hungry, and 1:15 हो गए हैं, और मैंने ऑर्डर किया है गार्लिक नान और दाल तड़का. गार्लिक नान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फूड आइटम्स. सो आई विल टेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड गिव एन ऑनेस्ट रिव्यू हाउ इट इज़. ओके, इट लुक्स सॉफ्ट, बाकी खा के टेस्ट का पता चलेगा. Oh my god, there is so much oil in the dal. But the color looks good. और अभी भी इतनी भूख लग रही है ना कि my mouth is just taste it now. How is it? I think garlic naan is fine. Dal is a bit spicy. MP में so it's 5:30 now, and I slept so badly. Like for 3 hours I slept, and now I woke up, and now I'm planning to apply nail paint and eat some snacks. So it's 5:30, but Raj isn't back from work. He said that it will take 1 hour more. So till then I'll do some more stuff. So that's the weather currently. Looks beautiful. I just can't wait to move out. I mean, stuck in the room since so long. Not bit used to it. So yeah. So now it's time for nail paint. I'll show you how it looks. Look at this beautiful weather in Ratlam right now. Those people are playing football. बारिश में फुटबॉल खेलने का अलग ही मज़ा है. So beautiful, and guys, I can hear some peacocks also.
here. I don't think that is a peacock. But yeah, there are some peacocks in this area, and if I go down and explore, maybe I can find one. But feeling so grateful that the weather is so beautiful and it is making the entire landscape so pretty. These are actual रतलाम की गलियां. अभी तो सब लॉकडाउन की वजह से बंद है, बट बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे, है ना. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिनर. तो राजेश्वर जिनकी क्लिनिक पे गए थे केस करने, उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया है. सो वी आर गोइंग टू देयर प्लेस फॉर डिनर एंड आई एम गेटिंग रेडी. और मीनवाइल मैंने अपना नेल पेंट भी चेंज कर लिया था. फीलिंग सो गुड. नेल पेंट लगाना कितना बड़ा टास्क होता है ना. तो नाउ आई एम गोइंग टू डू माई मेकअप. आई एम गोइंग टू कीप अ मिनिमल लुक like for the dinner because we are going at their home. So I've just applied concealer abhi, and now I'm going to apply foundation. So the concealer that I use, it's LA Girl Pro Concealer. It's high resolution definition, and the foundation that I use is Sephora foundation. So I think this much, only this much works for me. So that's my pretty basic makeup look that I've created in front of you all. And the only thing that bothers me right now are my eyebrows, because it's been lockdown in Indore and I haven't been able to get my eyebrows done. So rest, I think it pretty much works for a family dinner currently, and I'll keep you posted on. So this is what I'm wearing, and आज हम black and white बन के जा रहे हैं because I'm going to show you what he is wearing. Okay, ready? Yes. So he had a long day. मैंने तो सारा दिन सो के बिता दिया and he had a long day. So how was your day? It was good. It was good. हम black and white हम चेस बोर्ड बन के जा रहे हैं. So we didn't plan it. It just happened, और बहुत awkward लग रहा है, but ठीक है, it's okay. We are used to it. So now we're going for dinner and I'm pretty excited. इतने टाइम बाद किसी घर जा रहे हैं डिनर पे. Hopefully सब safe रहे, सब healthy रहे. That's what I wish for. So guys, we just came back from the dinner and अभी 2:30 हो रहे हैं रात के. So it was like dinner cum party. So it went really long and it was really good, nice time we all had together after such a long time. And now the cases have started reducing, so we hope like these kind of gatherings will keep on happening, because socializing is very important for our mental health. So yeah, so now it's good night. Tomorrow we have to check out at 10 a.m. and yeah, thank you for watching this video. You want to say something? Good night.